So, hello and hi guys, welcome back to another video of Blox Fruits। तो guys, हमारे यहाँ पे Blox Fruits में आने वाला है कंट्रोल का रीवर्क। तो guys, कंट्रोल का रीवर्क आने ही वाला है, इसका ट्रेलर एंड शोकेस आ चुका है। सो जल्दी से देखते हैं कंट्रोल का शोकेस एंड ट्रेलर। अरे तो होप करते हैं कि मेरे को Blox Fruits वाले वो ना दे दे कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट दे दिया ना तो मोए मोए हो जाने वाला है। तो इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा कि आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा क्योंकि ज़ियोलेस आ गया। उसने क्या पकड़ रखा था गाइस? ओए ड्रैगन आ गया ईस्ट वाला। तो ये कौन आ गया? अबे उज़ो था गया यार। अबे देखो यार, इसने क्या पकड़ रखा है। और गाइस हॉट एंड कोल्ड चेंज हो गया यार, पूरा का पूरा हॉट एंड कोल्ड चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ ज़ियोलेस ने पता नहीं क्या पकड़ रखा है यार। और इन लोगों ने तो पकड़ रखा है पता नहीं क्या। और ये देखो गाइस, कोई नई स्वॉर्ड लग रही है। अगर मैं हेलो साइट मान सकता था, पर ये हेलो साइट नहीं है यार, ये पर्पल है। कुछ नई स्वॉर्ड है यार लगता है। इन दोनों ने तो डुअल ब्लेड और पोल पकड़ रखा है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको फटाफट से। ड्रैगन टैलेंट। इन दोनों में तो गाइस घमासानी होने वाला है। अरे यार ये बंदा मेरे को बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। अबे इसने तो गाइस गेट खोल दिया ये वाला। अरे जो ये ज़ियोलेस है गाइस, ये ना कोई अच्छी नई स्वॉर्ड यूज कर रहा है। और गाइस ये देखो डन होने वाला है कंट्रोल का रीवर्क। अबे लैब वगैरह भी चेंज हो चुकी है। ओ तो कुछ ऐसा दिखने वाला है कंट्रोल। गाइस कितना अच्छा होगा अगर ड्रैगन से अच्छा हो जाए ये फ्रूट। तो गाइस बताना कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होगा या फिर ड्रैगन कमेंट्स में। What are you doing here? अरे तो इसका नाम संज है क्या? Stop. Don't do this. ओ भाई साहब, तो आ चुके हमने हमारे दो बंदे। और भाई इसने तो ईट कर लिया यार इसको। अरे यार कंट्रोल तो बहुत अच्छा फ्रूट बन चुका है यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। और गाइस इसने टेलीपोर्टेट कैसे किया भाई? पोर्टल जैसा फ्रूट को लग रहा है मेरे को। ओ भाई रिफ्लेक्स। अबे इतने डब्बे। अरे तो ये इसका M1 जैसे दिख रहा है। देखो गाइस, ये हेलो साइट की एबिलिटी है। बताओ मेरे को, हेलो साइट की एबिलिटी है क्या? भाई नहीं, ये हेलो साइट की एबिलिटी नहीं है, नई स्वॉर्ड है ये। टेलीपोर्टेट देख रहे हो भाई इसका? मैं इसको ईट करने वाला हूँ गाइस, कित्सुने के ऊपर मैं इसको ईट कर लूंगा।
ये तो पोर्टल जैसा डोमेन बना दिया यार। कंट्रोल फ्रूट ऑन टॉप। काट डाला भाई, उस तो जियोलेस को काट डाला इन्हें तो। ब्रो कंट्रोल स्टोलन। ओ गाइस, हमारा ये वाला ड्रैगन फ्रूट आ चुका है और किड गेमिंग आ चुका है। और गाइस ये बैंडिट है लग रहा है यार। और ये क्या निकाल रहा है किड गेमिंग अपनी पॉकेट से। इसके पास भी न्यूज़पेपर आ गया। What? Control Fruit stolen? Huh? एन्यू भी है यहाँ पे। Control, huh? Interesting. अबे ये कौन है यार? I give Uzoth one job and he fails? Sir, where are you going? Silence. ब्रो ओरा प्लस इन्फिनाइट। My lord. अरे रिपिंद्रा का ओरा भी कम नहीं है यार। Everything in that trailer was peak. Me and Uzoth got pieced up by the new control boss. Man, we got sauced up. Oh yeah, my voice acting was a bit chopped, but nah, that video carried everything. अरे तो वो बंदा बॉस है गाइस, अभी पता लगा हमको तो। Blox is starting to add more lore to the game because at the end of the trailer itself as well, we got My Game 43, aka Redhead. He got mad at Uzoth. Then we got Rip Indra. He got mad at me, and we got some new faces as well. Yeah, this is about to be crazy. बे mad at me क्या बोल रहा है बे Let's तू? get into what you guys have been really waiting for: the control. कितना अच्छा दिख रहा है ये। Reshape the battlefield by cutting, creating, and manipulating the Oh, spaces. This is bro. what the rework is all about. And that's exactly what I'm about to show y'all right now. Okay, so these are the M1s outside of the domain. ओ तो इसका नाम आउटसाइड डोमेन हो चुका है। इसका M1 भी अच्छा है यार। Or like mythical fruit M1s. Plus they look fire. Just animation, peep the VFX. Yeah, that's cold. Next up, we got the X move outside of the domain. The player dashes to the enemy to stun them and then throws their dagger back towards the enemy with an automatic slashing effect. It also disassembles whoever is hit and reassembles them further away from you. Tell me that's not gas. Alright, now we have the C move outside of the domain. You throw your dagger in a spinning motion, cutting down enemies and certain objects in your path. It also returns to you like a boomerang while pulling your enemy closer to yourself. And then last but not least, we have the F skill, which is basically the same move while you have your domain open or closed. You throw your dagger towards your current mouse position and teleport. तो इसके मूव हम डोमेन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। और इसका F मूव गाइस मैं देखूं टेलीपोर्टेट करके से कर पा रहा है, तो ऐसे कर रहा था गाइस टेलीपोर्टेट। और इसके कॉम्बोज तो बहुत अच्छे होने वाले हैं ब्रो। और गाइस ये डैमेज भी करता है। वाओ। As soon as your dagger lands on them, keep it right now. Yes, sir. All right, and now for the most important part of the control rework, the Z move. Tap the Z move to open your gigantic domain. Wow. And peep the visuals on it. It looks so much better than before. The upgrade is insane. And then by holding the Z move, you can close it as well. Now, once you have your domain open, the real fun is going to start. You have two different modes you gain access to. One is the hands mode and one is the daggers mode. The hands mode purpose is for creating and controlling the battlefield. And y'all are going to see it once I showcase it. And meanwhile, the dagger mode is meant for cutting and execution. And to switch between the modes, you have to tap the Z ability while you're inside of your domain. अबे इसके अंदर तीन भाई मोड, कितने मोड है इसके अंदर। एंड इसका जो डोमेन है ब्रो, Which is also that indicated is by some sick special bro। VFX as you can see. Alright, and while you're inside of your own domain, all your movement related animations are changed as well. So peep the idle animation right now, it's looking mad clean. The dashes are mad fire too, they got changed as well. And the jump animation looks fire too. Not only that, but your ये इसका वॉकिंग एनिमेशन गाइस मेरे को पेन फ्रूट की याद दिला रहा है यार। उसका भी ऐसा ही है। cool future now. Whenever you flash ओ माय गॉड कितना अच्छा फ्लैश टैप है गाइस इसका। गाइस वो तो ड्रैको रेस से भी अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। the location you land at will spawn a pillar right below you that's going to launch you straight in the air for extra movement.
Yes, sir. All right, so just so you guys know, just like the old control fruit, a lot of the crazier buildings on C3 can't be cut up, and the cutting and make this one even crazier. Let's get into the M1s now for the dagger mode. By swiping your mouse, you're gonna cause a massive slash spanning over the entire screen. You can either hold it or quickly slash too. And then once you cut an object, it's gonna make it float, and you can cut it into even more tiny pieces afterwards, which is really fun. And you can also catch other players lacking inside of your domain. मैं तो पूरा सीका सली कर दूंगा गाइस, ये स्पैम बहुत है यार. Next move. Once you land it, you do a crazy combo, and I mean it's actually crazy. Look at it right now. It looks peak. Yes, sir. Now for the C move. You basically release a barrage of 3 slashes towards your mouse position. If you spread out your slashes, क्या ये unlimited है? multitude of AoE slashes. But if you use them all in the same position, the slashes expand into a massive AoE. Just like you can see right here. That was into dagger mode. We still have to showcase the hands mode right now. All right, so let's start off with the M1s. By tapping M1, you create giant cubes. And the more you tap, the more you create. ओ तो वो हैंड मोड यूज कर रहा था गाइस, ये क्यूब्स बनाने के लिए. मैं बोला कि ये क्यूब्स कैसे बना रहा है यार, तो अभी पता लगा गाइस वो हैंड मोड यूज कर रहा था. The size of the cubes you spawn in. You can either throw them one by one or all at once. It don't matter. Alright, so next up we have the X move. You send a powerful shockwave in front of you. If you hit an enemy with it though, you start piecing them up with a bunch of boulders and slam them towards the ground afterwards. But if you didn't hit anybody with it, don't worry about it. You still throw a bunch of boulders at your current mouse position that do a lot of damage. Next up we do have the C move, which is also really cool. Once you press it, you pull down the hexagons from your domain's wall and launch them towards your mouse. अरे यार ये तो ओपी है गाइस, बहुत अच्छा है यार. इन्होंने कंट्रोल को बहुत अच्छा बना दिया है. मेरे को तो लगता है कंट्रोल फ्रूट बेटर होने वाला है ड्रैगन से. Here's some other cool features this fruit has. Once you have your domain open, you can walk on water, dash on water, it doesn't matter. If you leave your domain, you can also bring your domain with you. And once you leave your domain and you tap Z outside of it, your domain goes to your current position. तो फाइनली गाइस सी इवेंट अच्छे होने वाले. हम लोग पानी के ऊपर चल तो सकते हैं यार. फाइनली Tell me that's not fire. Next up, we got the V move. I don't really got to explain this one since it's very similar to the previous version. However, it did get a crazy visual upgrade. Just look at how sick it looks. Bro, I don't want to get by this OP. move whatsoever because the devs, I don't know, they were going crazy with this move. Now, if you hold the V move, it's a whole different story because it triggers this insane cinematic right here. Go peep it right now. Go peep. Yo. Every time I see the cinematic, I get real hype. Oh my God. Yo. Oh my God. इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ब्रो. So many new abilities, so many things to do, and it's overall just a banger top tier fruit. I really had a इसने बोला टॉप 2 फ्रूट यानी कि सेकंड बेस्ट होने वाला है. Fun to use as well, and I cannot wait for you guys to get your hands on it. Control Rework was extremely hype, but we also have another crazy feature coming to the game. Blox Fruits is now introducing an all-new dungeon system, which is a new PvE experience similar to raids that can be played with up to 4 players. Your goal is to clear multiple floors of enemies and bosses to gain access to the all-new trinket equipment system, which I'm going to explain later on. Players will gain access to the dungeons through the dungeon realm, which is basically a hub location that can be accessed in C2 or 3, or you can just access the dungeons through the new realm. तो हम यहाँ से ही टेलीपोर्टेट कर सकते हैं आपसे ब्रो. इट इज फायर. और डंजन सिस्टम देखा आपने भाई, ये क्या बना रहे हैं यार गेम को ब्रो. 25 दिसंबर को सब लोग रेडी लेना कंट्रोल रिवर्क के लिए. And similar to the raids, you're gonna have to be level 1100 or above to join them. Once you get your squad ready, you can hop in and get started. Just make sure you're prepared because it's gonna be a lot of throwing hands. I mean a lot. Now for the cool part. After you clear each floor, you're gonna roll for special buffs that power up your character. अबे क्या बना दिया यार इन्होंने ब्रो. ओपी है यार ये तो. Characters in a special way. And these buffs are fully randomized every time you play, which is gonna make every run extremely fun. Keep in mind that bosses spawn every 5 floors and they're not a joke. These bosses did not come to mess around. After you clear the dungeon, you can get access to the new trinket accessories, which are going to buff your stats.
अरे गाइस नई एक्सेसरीज भी आ चुके हैं गाइस, मजा आएगा। Extra modifiers to your builds. You can have 2 of them equipped at the अबे same 3 एक्सेसरीज लगा सकते हैं हम लोग अब से। using the new build menu. This menu summarizes all the buffs the player currently has equipped, so you no longer have to use the nerd NPC to find out what accessories or trinkets do. They each have 3 core attributes, which are base stats, grade, and modifiers. Each trinket has a base stat bonus players receive for having the item equipped. The grade of the trinket determines how strong of a stat bonus is given, and the modifiers are extra bonus effects that the trinket provides for the player outside of the base stats. And these stats are rare and more difficult to acquire. And here are some of the following actions that you can do with the trinkets. You can fuse trinkets together to increase their grade and make them more powerful. And you can also reforge your modifications by spending data to reroll their properties. However, this can only be done with grade 3 or higher trinkets. वो तो अच्छा सिस्टम है यार ये। For some data. Overall, these trinkets are a very sick addition to the game. Let me know your thoughts on them in the comment section down below and spam them W's. You feel me? All right, and next up we have something for the mobile players that should improve your gameplay experience by a lot. And I'm talking about by a lot. These include a new Zioles बोल रहे हैं मेरे एंड नहीं है यार ये। और गाइस देखो मोबाइल का भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया यार इन्होंने। क्या बोलूं मैं गाइस, ये ब्रो ये जो है ना ब्लॉक्स फ्रूट्स बहुत ओपी है। And can be selected from the new settings gear menu if a player ओ ब्रो नई सेटिंग्स भी आ चुकी है, कितना कुछ है गाइस। और mobile device. One of the cool things is that it allows for you to quick cast your abilities when selected, and your player will be placed in shift lock view. अब तो ब्लॉक्स फ्रूट्स को आप कंप्यूटर जैसा खेल सकते हो भाई मोबाइल में भी। अभी इसमें हम लोग गाइस बना पाएंगे अपने कॉम्बोस, बस अच्छा फोन होना चाहिए। और देखो गाइस इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, माशी इधर उधर कर दी। The top bar also got redesigned for ease of access. Overall, a W change, and I hope you mobile players will enjoy them as well. All right, that's gonna be it for this video. Hope you guys enjoyed. Make sure to come back on Christmas, December 25th for our winter. ओ ड्रैगन की स्किन लग रही है मेरे को तो ये, और वो था क्रिसमस का। अच्छा और गाइस हमारा ब्लॉक्स फ्रूट्स का अपडेट आने वाला 23 दिसंबर को, 2 दिन बाद। रेडी रहना, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, कीप वाचिंग लकी गेमिंग यूट्यूब चैनल, बाय बाय।